One day, भूत प्रेत की कहानियां जो है ना, वो मुझे भी बहुत उकसाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मुझे डर चीज जो है वो बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है। तो डर तो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी डरना चाहता है। तो फिर भी बोलता है डरावना कहानी सुनाओ, डरावना कहानी सुनाओ। फिर डरता है, फिर बोलता है डरावना कहानी सुनाओ। तो ये भूत प्रेत की कहानियां भी बहुत होते हैं हमारे जंगलों में, पहाड़ों में। तो क्योंकि गांव इतने दूर दूर है कि एक गांव से दूसरा गांव जाने में बीच में कोई इंसान नहीं, कोई आदमी, कोई जानवर भी नहीं। अकेले रात को 1-2 बजे जब जाते हैं तो लगता है कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो इस तरह का जो है ना, उससे कहानियां बहुत उत्पन्न होते हैं, कहानियां पैदा हो जाती हैं। तो इस तरह की कहानियां बहुत है और हर जगह का अपना एक पहचान होता है, अपना एक वजूद है जिस हिसाब से कहानियां बनती है और बनाता है। तो वो बोलता था कि अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई कि मेरे सिर पे सींग है तो मैं तुम्हारा सर कटा दूंगा। अब ये जो नाई था, ये इसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी और इसने राजा के बाल काटे। अब ये बात जो थी इसके पेट में, और कह सकता नहीं है क्योंकि राजा उसको गला कटवा देगा। तो उसकी तबीयत खराब होने लगी और बेचारा बीमार पड़ गया। अब जो दवाई ले, वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, और वो ठीक ही ना हो। और इतनी बुरी हालत हो गई कि उसकी फिर उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि क्या वजह क्या है, तुम ये बताओ। तो उसने कहा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा तुम मुझे नहीं बता सकते, तुम एक काम करो, तुम जंगल में जाओ और किसी पेड़ को वो बात बता दो। तो वो नाई जंगल में गया और उसने पेड़ के पास जाके पेड़ को पकड़ के पेड़ के उसमें फुसफुसाया कि राजा के सिर पे सींग है। और उस दिन से नाई की तबीयत ठीक हो गई, नाई तो वापस आ गया। फिर वहाँ से कुछ बढ़ई गुजर रहे थे उस जंगल से और वो पेड़ कटा और वो कट के उस पेड़ की एक ढोलक बनी। और वो घूम घाम के वो म्यूजिशियंस जो थे बहुत सालों बाद राजा के दरबार में आए। तो राजा के दरबार में जो ढोलक बजी तो ढोलक से गाना निकला, राजा के सर पे सींग, राजा के सर पे सींग। तो मुझे इतनी खूबसूरत कहानी लगती है कि कहाँ से घूम घाम के और राजा को पता चला कि राजा के सर पे सींग है। Thank you for that. I mean, there's something universal, of course, about storytelling. There's something magical that connects us. When it's a good story, you feel it. For example, when Vishalji was reciting that, you can kind of, you feel it, right, in your soul and your heart. But it's really interesting to me how this is something that transcends all boundaries, all borders. We all have that capacity in us to understand, to connect. I know. The journey of Kathakar started in 2010 under the aegis of UNESCO. Kathakar Narayan, the Travelling Literature Festival, was conceptualized. The festival was inspired by the life and works of Thakur Vishwanarayan Singh, noted writer and the first Braille editor of India, who, through his writing, brought light into the lives of 10 million blind people. A Sovietland Nehru awardee, Mr. Singh not only translated the literary works into Braille, but also supported the cause of reading among children, especially the concept of own a library. Kathakar came into existence in 2011 as part of Kathakar Narayan to create a platform for oral initiatives. UNESCO, with its mandate for intangible heritage and oral traditions, supported the initiative to promote and preserve the ancient art of storytelling. another mango, 3 mangoes, 4 mangoes. Wow, we're doing well here. Okay. Yes, my friend. Plums, nice one. Put them in there. That's good. One more. Cherries, brilliant. You want to put one in? Another mango! Brilliant! As he was picking the fruit, he never saw the monster, he never heard the monster. You know what? He smelled the monster because suddenly the branches started shaking. Show me those branches shaking, please. The top branches started shaking. As they parted, you ready? He's going to come 20 feet tall. Dun, dun, dun!
My goodness me, he had a head the size of a beach ball. Godong. He had a nose the size of a pineapple. Badang. He had a spot the size of an orange. Badong. At the end of the spot, there's a black hair going. And the boy couldn't get the words out. He was going, monster! Golos with his whip, his brother behind him. And there was the girl. And the girl said, come over here, sit down and eat with me. The girl said, no, you have stolen it. Yes, yes I did, she said. Yes. But put away that whip. She said, no, I shall, you will do nothing, she said. And keep her fingers and the whip shot out of his hands in the opposite corner. She said, now, sit down and eat with me. Wait, can't read more. Special, very different kind of a festival known as Kathakar Festival. Nivesh has been doing it since 2010 and we must applaud for their effort, and they have revived the tradition of storytelling in our society. मुझे ये कथाकार का जो कार्यक्रम था बहुत पसंद आया। यहाँ पे जिन लोगों ने जिस तरीके से अपनी आवाज़ बदली, जिस तरीके से अपनी कला दर्शाई, बहुत अच्छी थी। जो यहाँ पे नुक्कड़ नाटक बोलिए, जो चुगलखोर जो कहा गया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। कहानी सुनाने के लिए जो देश विदेशी लोग आए, पपेट शो किया, दैट वाज ऑसम। अरे फॉरेन कंट्री से आए, हम बच्चों को ऐसे ऐसे बताया, तो वो कुछ और स्कूलों में जाके ऐसे उनका मोटिवेट करे और उन्हें कुछ अलग अलग चीजें सीखने के लिए बताए, जिससे कि हम जैसे बच्चे क्या पता कौन अच्छा जाके इनके जैसा बने, कोई राइटर बन जाए। बस इसलिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ये आगे जाके और बच्चों की मदद करे। It's not the people who shape these stories. Actually, it's the other way around. It's the stories that shape people, that shape lives. And that is why we were very, very happy to partner with Nilesh and take this project. पर मोस्टली मैं जो कहानियाँ होती है वो गाता हूँ थोड़ा, और I sing these little folk songs which always have a story in it. ऐसा एक गाना है हिमाचल का, उसमें कॉन्वर्सेशन हो रहा है माँ और बेटी के बीच में, और दोनों बैठे हैं गांव में, और माँ पूछती है, बेटी को पूछ रही है, भाई तुम भाई इतनी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, तुम ठीक दुबली हो गई हो बहुत। मोरनी मारना मोरनी मुकारा हो अमाजीता मोर पिंजरे पुआना हो, ओ अमाजीता मोर पिंजरे पुआना हो। इस तरीके। I think Kathakar is a great initiative. It's a beautiful evening to be here. Wonderful things that we got to see, and I think the children are enjoying so much that they just don't want to leave from here. It's almost end of the day. The importance of storytelling. You've done it through various media, photography, writing, poetry, films, and interestingly, stories can be told in various manners. It's not just one. It's not just the written word. I thought I should be asking you. There are little stories everywhere. There's this magic in life, if you start looking, there are all these little things everywhere, and everywhere you see these little short stories, and the minute you start thinking on those lines, there's so much that you need to share and to convey and to write. It's just it's endless. I found it as a very liberating experience when I started. कार्यक्रम कथाकार अपने नाम के रूप अनुसार पूर्ण रूप से सार्थक है। देश विदेश से आए विभिन्न कलाकारों ने इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर अभिव्यक्ति की अनेक कहानियाँ सुनाई, वे सच में सराहनीय हैं। उनके भाव, उनकी अभिव्यक्ति, कितनी प्रशंसा की जाए वह कम है, उनके लिए शब्द ही नहीं है।
So Jack is very pleased. He puts on his cap, puts on his jacket, and he's feeling so powerful. I mean, if you tell an 11 or 12-year-old boy that you've got some money in your pocket and go and buy something, so he feels very powerful and big and all grown up. And he goes to the bazaar. He does the shopping, and he's left with about 4 pennies in his pocket. This is the third year that I have been coming here. I've been coming here since the last 4 years. And I've been attending Kathakar from past 3 years, and trust me, this is the best event which could happen in this city, because we see concerts, we see people telling their experiences, and it is a perfect combination of all those things. And I've heard many storytellers around these 3 years. Coming here and listening to those people, this is the best experience one can have, and I would urge people, and I've been doing that through social media because I'm an ardent fan of Kathakar. The situation, however, for most oral narratives still remains in danger, with many art forms which even we have showcased on this platform are on the verge of extinction. Many because of the lack of interest in the new generation to learn, and others due to lack of financial viability for the profession. Our effort, therefore, is just a drop in the ocean to support, revive, and celebrate the various oral traditions of not just India, but those present in various countries and cultures. What started as an initiative to provide a platform and new audience to dying art forms has today turned into an annual celebration of storytelling.